Hello everyone, I hope you guys are fine and safe at home. I am Md.M. Today I'm going to discuss the poem Animal, which is written by Walt Whitman. Before I may proceed, I would like to give you the brief life sketch of the poet Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. A humanist, he was a part of the transition between the transcendental and realism, incorporating both views in his work. He was born on 31st May 1819, West Hill, New York, US. Died on March 26, 1892, Camden, New Jersey, US. His remarkable works are Franklin Evans, which was published on 1842, The Half-Breed, which was published on A Half-Breed, which was published on 1846, Leaves of Grass, was published on 1891, Democratic Wisdom, was published on 1871, Memoranda During the War, was published in 1876, and etc. So, before we go through the stanza voice description, let me give you the brief introduction of the poem, that what is this poem all about. In this poem, Whitman compares man to animals. He finds that man lacks many virtues that animals have. He finds that animals remain so calm and quiet. They are self-contented. So look, in this poem, Walt Whitman, what is he going to do? He is comparing man and animals. And that means this is his personal opinion or observation that he finds man lack many virtues that animals have. ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था, जो उन्होंने रियलाइज़ किया था, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारी ऐसे गुण हैं, बहुत सारे ऐसे वर्च्यूज़ हैं जो आपको एनिमल्स में तो देखने को मिलता है, लेकिन वो चीज़ें मैन में नहीं होती हैं, आदमियों में नहीं होती हैं. He finds that animals remain so calm and quiet. They are self-contented. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो जानवर जो होते हैं वो क्या रहते हैं, आपको बहुत ही काम एंड क्वाइट, वो हमेशा बहुत ही शांत रहते हैं, एंड दे आर सेल्फ कंटेंटेड. वन ऑफ द मोस्ट important thing, that is self-contented. But on the contrary, in the case of human being, they are never ever self-contented. Always they are striving for more and more. They want to acquire as much as they can. मतलब इंसानों की ये फितरत होती है कि वो कभी ना किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं. हमेशा उनका जो मोटो होता है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ टू एक्वायर एज मच एज ही कैन. वो हमेशा चाहता है कि वो जितना से ज़्यादा हासिल कर ले, वो भी उसके लिए कम है. लेकिन ये एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता है. दे हैव नॉट टू सीक द हेल्प ऑफ एनीवन. दे डोंट वरी और ग्रम्बल अबाउट देयर कंडीशन, एंड दे आर नेवर एवर आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स. एनिमल्स जो होते हैं वो कभी किसी की मदद नहीं चाहते, एंड दे डोंट वरी ग्रम्बल अबाउट देयर कंडीशन, और ना ही कभी वो अपने हालात के बारे में किसी से शिकायत करते हैं. इंसानों की तो ये फितरत होती है कि अरे गॉड ने मुझे ये नहीं दिया है, मुझे वो नहीं दिया है, मुझे ये चीज़ नहीं मिला, मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए था, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी. मतलब हमेशा वो क्या करता है, चीज़ों के लिए शिकायत ही करता रहता है. आपने देखा होगा कि जनरली जो होता है, अगर इंसान को कुछ नहीं मिला तो गॉड आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स. And even if he got whatever he was expecting, then what would he do? Even though he is not happy, then he will ask for more and more. ऐसा आपको किसके केस में देखने को नहीं मिलता है? ऐसा आपको एनिमल्स के केस में देखने को
नहीं मिलता है। एंड दे डोंट लाई अवेक इन द नाइट वीपिंग ओवर देयर सिंस। इंसान क्या करता है, दिन भर तो गुनाह करता ही है। इंसान जो होता है, दे आर सिंपली स्टेच्यू ऑफ सिंस। वो जो होता है वो किसका पुतला होता है, वो तो गुनाहों का एक स्टेच्यू है, चलता फिरता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जो होता है ये एनिमल के साथ नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, देखो हम दिन भर जो भी गलतियां करते हैं, रात में जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमसे क्या गलतियां हुई है, तो हम इस चीज़ पे क्या करते हैं, रिपेंट करते हैं, विल क्राई, ठीक है, विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड। हम लोग ऊपर वाले से इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई। लेकिन ऐसा कौन नहीं करता है, ऐसा एनिमल्स कभी नहीं करते। एंड देन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैन फॉर एवर रिमेन्स अनहैप्पी। और इसकी बात क्या होता है कि इंसान जो होता है वो कभी खुश होता ही नहीं है। उसे जितना मिल जाए, मैंने कहा ना, पहले भी आपसे कहा, दे आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर मोर एंड मोर। उन्हें जितना मिल जाए वो उनके लिए कम है, वो हमेशा उससे ज़्यादा की ख्वाहिश रखते हैं। और देखो इंसान की जो यही एंडलेस डिज़ायर जो होती है वो उसको कभी खुश रहने नहीं देती है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज क्या है कि हमें जो भी मिल रहा है हमें उसमें खुश होना चाहिए, हमें थैंक करना चाहिए गॉड का कि एटलीस्ट वी आर फॉर्चुनेट दैट वी गॉट एटलीस्ट दिस मच, बट वी आर नेवर एवर थैंकिंग गॉड। On the other hand, we'll simply ask for more and more. Thank you very much, guys. Next, we'll discuss in our upcoming video. Till the time, take care of yourself.